Very good evening, students. Welcome to the AARAMBH. Just give me 1 second. Very good evening. We will start sharp at 4 p.m. Well, another two more minutes and we will start. Good evening. Very good evening, Priyanka. We are waiting for many more students to join. Let's begin. Very good evening, all the participants. If I am audible, visible, clearly, put a yes into the chat box. If I'm clearly audible and visible, put a yes into the chat box. Thank you, Vijay, for your quick response. Thank you all. Thank you. Thank you. Thank you so much. Thank you. Very good evening, everyone. Welcome. Welcome to our live hands-on masterclass, a learning experience. AARAMBH, the world of finance as an analyst. I'm thrilled. I'm really thrilled to see so many enthusiastic participants joining us today. I'm Indranil. You know me very well. Head skill advisor and counselor, over a decade of experience as a teacher. And I'll be your host and guide throughout all of you for this exciting learning journey. आज के आपके जो आरंभ सेशन है, ये शुरू करने से पहले मैं कुछ रिवाइज करना चाहता हूं. This आरंभ सेशन started last month of August. उससे पहले भी आरंभ सेशन हुआ था, बट ये जो सीरीज शुरू हुआ है, ये लास्ट मंथ August 5th से शुरू हुआ था. Day 1, we learned about how does a financial analyst analyze financial statement.
company report, and the story behind the number. Day 1 हमने सीखा था. Day 2 हमने क्या सीखा? Methods, tips, and technique to forecast profit and valuation of any business. Day 3, what we have learned? Reality of capital market and how does an equity analyst operate. Day 4, capital market. How do hedge fund operates? Now today, आज सितंबर मंथ के पहला आरंभ, इस सीरीज का कंटिन्यूएशन, and your today's topic is again capital market. How do investment banks work? Very interesting topic. कैपिटल मार्केट जो शुरू हुआ था डे 3 से, जहां पे रियलिटी ऑफ कैपिटल मार्केट आपने सीखा, उसके बाद हेज फंड के ऊपर सेकेंड डे 4 में हुआ, एंड नाउ टुडे कैपिटल मार्केट के ऊपर डे 3, दैट इज हाउ डू इन्वेस्टमेंट बैंक वर्क. एक इंपॉर्टेंट, एक इंटरेस्टिंग अनाउंसमेंट है टुडे. आज का ये जो टॉपिक है, हाउ डू इन्वेस्टमेंट बैंक वर्क, ये पार्ट 1 है. बहुत ध्यान से सुनिए, ये पार्ट 1 है. पार्ट 2 एजेंडा फॉर द डे में थर्ड पॉइंट पे देखो, पार्ट 2 टुमारो 4 सितंबर एट 7:45 PM. क्योंकि ये टॉपिक इतने वास्ट है और इसे बहुत अच्छे से सीखना जरूरी है. दैट्स वाई ये 2 पार्ट पे होगा. टुडे इज योर पार्ट 1 and tomorrow 4th of September at 7:45 PM part 2. Yes, Mr. KV, you will get your this is my first session. How do I get access to previous session? So Mr. KV, all the sessions are available in our YouTube page. So go to SkillEdge official YouTube page, you will get each and everything. आपको मिल जाएगा. So without taking much more time, let us start today's session. So let's make the most of this opportunity to learn, grow, and empower ourselves with the tools to navigate the world of finance with the top industry mentor, none other than Mr. Rohit Ghosh, sir. Just give me 1 second. just making confirm that Rohit sir is joined. Just give me 1 second. I'm making Rohit sir co-host. Yeah. Very good evening. Welcome. Over to you, Mr. Rohit Ghosh, sir. Thank you, Adrian. Thanks a lot. Good evening to all of you, all the participants over here. Good to see you all. I hope I am the host right now, right? Yes. So Indranil, I am the co-host. Okay. So I am. All right. Cool. So am I audible to all of you and I am visible to all of you? Can I get a quick yes on the chat box? Can I get a quick yes on the chat box? Am I audible and visible to all of you? All right. All right. Let's start. इंद्रनील, आप ये स्क्रीन बंद कर सकते हो. स्टॉप शेयरिंग द स्क्रीन. थैंक यू. And let me just one more thing. Just give me 1 minute.
Okay. So I have disabled the chat option now, and then I will initiate the chat option again. So since most of you have said that I'm audible, I'm kind of making the chat option open to me only right now. So those who have not replied can quickly reply. मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है और मैं पूरी तरह से audible हूँ. Can I get a quick yes on the chat box जिन्होंने reply नहीं किया है, जिन्होंने अभी तक reply नहीं किया है? Can I get the reply? One or two people more? Yeah, मुक्ता आपने पहले भी reply किया था. ठीक है. Thank you. Guys, thank you for joining in. Let me share the screen and um, write few things over here. First of all, Indranil, thank you for initiating the AARAMBH session. बिल्कुल हम लोगों ने 5th of August is something that we started this journey. This is the episode 2, I would say. हम February and sorry, I would say June July में भी आरंभ हुआ था. That is series 1. ये series 2 है, आप कह सकते हो. 5th of August it all started, and 26th of August अगस्त का लास्ट आरंभ था. That was the 4th session. और जैसे इंद्रनील सर ने बताया, काफी कॉन्सेप्ट्स इसमें सीखे गए, काफी सारे कॉन्सेप्ट्स और बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स हैं. एंड सी आई टेल यू वन थिंग वेरी क्लियरली, राइट? एज अ कंपनी वी आर इन अ मिशन टू build 1 lakh analysts in 5 years. We are in 2.5 years now in existence, and we want to build 1 lakh analysts in next 2.5 to 3 years. When I say analyst, I'm talking about financial analyst. Now, financial analyst, आपको पता है कम से कम 10 से 12 अलग अलग roles and responsibilities में काम करते हैं. Starting from investment analyst, equity analyst, इन दोनों की सबसे ज्यादा डिमांड है अभी. Credit analyst, corporate finance analyst, mergers and acquisition analyst, research analyst, a lot of demand here. Then we call about market analyst. So you know, there are various form of analyst, और ये सब financial analyst के अंदर आते हैं. और एक बात बहुत common है, you know, when I talk to people who have done CFA या Tier 1 कॉलेज से जो लोग ग्रेजुएट होते हैं, IIT IIM से जो लोग ग्रेजुएट होते हैं, एक बात सब लोग ये कहते हैं कि सर, या कोई अगर सीए भी है और सीए के टॉप रैंक से लेकर बॉटम रैंक तक जो लोग होते हैं, जब उनसे इंटरेक्शन किया जाता है कि एनालिस्ट बनने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, तो कोई ये नहीं कहता कि एक्सेल इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एक्सेल या नंबर्स जनरली क्या दिमाग में घूमता है, बड़े बड़े स्प्रेडशीट बनाना, बड़े बड़े नंबर्स पे काम करना, वो एक एनालिस्ट का काम होता है. वो काम होता है, लेकिन आप एक बात समझो, एक्सेल में अगर आप नंबर डाल दोगे तो फॉर्मूलाज एक्सेल खुद बना लेता है. मॉडलिंग, एक बार नंबर डालने के बाद एक्सेल खुद मॉडलिंग कर लेता है. सो जब हम ये सब टर्म्स सुनते हैं ना, पढ़ाने वाले भी इसको नंबर क्रंचिंग की तरह पढ़ाते हैं, जो एक लेवल तक सही है. लेकिन उसके बाद अगर आपको आगे बढ़ना है, करियर बनाना है, तो सिर्फ नंबर से बात बनेगी नहीं. और यही आरंभ का और स्किलेज प्लेटफॉर्म का एक सबसे बड़ा डिफरेंशिएटर बोल सकते हो, या हमारा वो स्ट्रेंथ है. सो एज अ टीचर ऑफ फॉर लास्ट 17 years, कोचिंग मोर देन 10 lakh स्टूडेंट्स इन इंडिया, मैं ये बोल सकता हूँ कि नंबर्स अपनी जगह पे, इट्स ओनली 50% ऑफ द स्टोरी. नंबर से प्यार करना, नंबर समझना, एक्सेल में काम करना, इट इज ओनली 50% ऑफ द स्टोरी एज एन एनालिस्ट. जो अगला 50% है, वो मेरे हिसाब से पहले 50% से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो है कहानियां. आपको नंबर के पीछे की कहानियां पता है क्या? अगर आपको कहानियां पता है, तो आप एक सक्सेसफुल एनालिस्ट एज अ करियर अपना बिल्ड कर सकते हो. और यही मैं हमेशा हर स्टूडेंट से कहता हूँ कि वेदर यू आर अ फ्रेशर और अ वर्किंग प्रोफेशनल, बट अगर आपको एनालिस्ट बनना है, मतलब आपका ड्रीम करियर आपका एनालिस्ट है, जहां पे आप सोच रहे हो कि अगले 3 से 4 साल में आप जेपी मॉर्गन, गोल्डमैन सैक्स जैसे कंपनीज में अपने आप को देखना चाहते हो, आपको कहानियां समझनी आनी चाहिए. कहानियां कहानियां बहुत इंपॉर्टेंट है. एट द एंड ऑफ द डे,
कहानियां बहुत इंपॉर्टेंट है और कहानियां समझ में आनी चाहिए। और इसीलिए आरंभ बोलिए या हमारा प्लेटफॉर्म बोलिए, जहां पे हम नंबर्स के साथ साथ आपको स्टोरीज बताते हैं। और इस आरंभ में आप में से बहुत लोगों ने ये एक्सपीरियंस किया होगा, या आज जो पहली बार आ रहे हैं वो एक्सपीरियंस करेंगे कि हम कहानियां पढ़ के कैसे चीजें सीखते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो आज का जो सेशन है, आज जो हम सीखेंगे, जस्ट मेकिंग इट अ बिट, आज जो हम सीखेंगे, सो हम लोग ना, पिछले दो सेशन से, क्योंकि ये टॉपिक बहुत बड़ा है, और सो फाइनेंशियल मार्केट, फाइनेंशियल मार्केट जो है, सो फाइनेंशियल मार्केट इट्स अ वेरी बिग टर्म। हमारे प्रोग्राम में ये कम से कम 25 घंटे का टॉपिक है। फाइनेंशियल मार्केट के अंदर एक मार्केट आता है, कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट 5 घंटे का टॉपिक है, और वही मैं आरंभ में आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। इफ यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम डूइंग। कैपिटल मार्केट क्या होता है हमने पढ़ा। कैपिटल मार्केट का एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स डायग्राम, दोनों तरह का डायग्राम हमने सीखा है, कॉम्प्लेक्स एंड सिंपल डायग्राम। मैंने आप लोगों को दिखाया था। जो लोग नए आए हैं उनको एक बार मैं वो डायग्राम दिखाना चाहता हूँ, कैपिटल मार्केट्स का एक कॉम्प्लेक्स डायग्राम। दैट्स अ रियलिटी ऑफ कैपिटल मार्केट्स। लेट मी शो यू दैट डायग्राम वंस। बाय द वे, कैपिटल मार्केट्स क्या होता है? कैपिटल मार्केट फाइनेंशियल मार्केट का एक हिस्सा है, जहां पे कंपनीज जाते हैं और अपने बिजनेस के लिए पैसा रेज करते हैं। दैट इज व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय कैपिटल मार्केट। कैपिटल का मतलब होता है पैसा। एक बात याद रखना, फाइनेंस एक ऐसा सब्जेक्ट है, दैट्स वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल सब्जेक्ट्स, जो जिसको बहुत आसानी से समझा जा सकता है विद अ कॉमन सेंस। ये फाइनेंस वालों ने ही फाइनेंशियल वर्ल्ड को इतना टफ बना दिया है। बाहर वालों को, बाहर वाले जो जिनको लगता है मैं बीकॉम का नहीं हूँ या एमकॉम का नहीं हूँ, उनको क्या लगता है? उनको लगता है फाइनेंस इतना टफ है, इतना जार्गन्स लोग यूज करते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। एंड दैट्स द ब्यूटी, दैट्स द बेस्ट पार्ट टू लर्न अबाउट दिस सब्जेक्ट, बिकॉज कहानियों के थ्रू, हमेशा याद रखना, कहानियां हमेशा याद रहती है। एंड दैट्स व्हाट वी डू, कहानियां हमेशा याद रहती है, राइट? So I will speak in English also. I will speak in Hindi. That's what we do. So don't worry, Vijay. I will speak in English. I will speak in Hindi, and you will understand everything. So the stories are very, very important. Stories are very important to understand the numbers, and that's why finance is such an amazing subject, right? So capital markets are a part of financial markets, where companies go and they raise capital for their businesses. Okay. Now, how does a capital market look like? By the way, simple diagram of capital market. This is what हमने ये पढ़ा था. So companies want money, right? So typically, अगर आप गौर करो, this is a very simple diagram of capital market. This is company. Companies need money, so companies have the projects for which they need money, and these are people like you and I. So household savers, right? So company needs money, right? So company. So we will give the money to the companies, right? And so this is the capital we are giving to the companies, and companies in turn will give us the return. So companies need the money, we give the money to the companies, companies have the projects, and the money that we'll give to the companies, companies will give us the return on that money. That's it. That is the way fundamentally a capital market is, because the definition of capital market is, it's a market where companies go and they want to raise the capital for their businesses. It's very simple. But then the reality is very complex. So how can we make the complex easy to understand is what we are doing in these last 3 sessions in ARAM. So let me show you the diagram of reality of capital markets. Just give me 1 minute. I'll share the screen with you all. We'll go to the next slide. We'll stop this and I'll show you the screen. Yeah, here it goes. This is the reality of capital markets. This is the reality of capital markets, right? If you understand what we are talking is something like this. So this is the, I think the screen got disabled. Let me share once again. Yeah, this is the reality of capital markets. Now, in the last 3 sessions, we are studying about this diagram. Right? We have broken this diagram into small parts. Do you realize this is the companies I was talking about in the simple diagram? This is the household savers, right? But there are so many intermediaries now. This is what we are trying to understand.
And this is the reality of capital markets. I have told you one very important thing. The growth of capital markets in the last decade has been one of the significant developments in the economy. And the growth of capital market is also very, very important for the economy to move ahead. So we need to understand. So what happens is the heart of capital markets is the analysts, and we are here build the mindset of an analyst. Now, this is what analyst? This is an equity analyst in the capital market. This is an equity analyst. I told you, right? Financial analysts are of different types. This is the equity analyst. Equity analyst or an investment analyst is the heart of capital markets. And this is where we started learning. Last time we learned about the buy side. We learned about what's a pension fund, what's a mutual fund, what's an endowment fund, what's a sovereign wealth fund, and the best part, what's a hedge fund. Hedge fund is one of the most controversial funds, right? That's the hedge fund, right? Indranil, I got a message from Pradeep that he's not able to hear me. Just ping Pradeep that he has to log out and log in. I am audible, right, to most of you? Can I get a quick yes by few people? Can I get a quick yes from by few people? I'm audible, right? Okay, cool. Thanks. Indranil, you can ping, you can ask Pradeep to log out and log in. Yeah, thanks. So hedge fund, we learned about the buy side and the sell side. What do you mean by going long on a stock, and what is going short on a stock? If you remember, one of the diagrams we learned was this kind of diagram, short selling the Pfizer stock, right? Very interesting diagram, and we learned many interesting concepts. Today we are going to the next level. So those who want to learn more about the buy side, please go through the videos once again in our YouTube channel. If you are not able to go through the videos, I am going to repeat the buy side this week in the coming weekend in one of my batches. So you become part of the program and you can learn about the buy side, where we are going to talk about how do hedge funds work. As an analyst, what do you want? What do you have to learn in order to understand how does for any particular stock? What do you mean by going long, short, and all those kind of things, right? All right. By the way, there is one also very interesting point, right? Which is today, as I said, today we are going to learn about the sell side. Right, so sell side means investment banks, because let me just stop the screen. So this diagram is there in front of you. You can take a pic of it. Just keep the diagram in front of you. It's very important. Okay. Now, for the sake of bandwidth and everything, let me just stop the screen, my video, and let me share whiteboard once again. Let me write down a few things. So what was the last sentence? The last sentence, if you understand, for the buy side, it was the last sentence I used for the buy side, where all the funds are there, right? So the last sentence that I used for the buy side is, so all the institutional investors, the pension fund, the mutual funds, the hedge funds, the endowment funds, they make up the buy side. So the buy side is this collection of organizations that accumulate the funds, right? It's a collection of organizations that accumulate the funds. And obviously they use them to buy assets. When the organizations accumulate the funds, what they do with those funds, they buy assets in the financial market. The question is, who are they buying from? So these funds, mutual funds, hedge funds, pension funds, ये funds अपना खरीद किससे रहे हैं? राइट ये जो फंड्स हैं, ये फंड्स तो उनको हाउस होल्ड से आते हैं, इंडिविजुअल से आते हैं. जैसे आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो, राइट? तो इंडिविजुअल से आ रहे हैं इनके पास पैसा, दे आर एक्यूमुलेटिंग द फंड्स, ये तो समझ में आया. लेकिन ये बाई किससे कर रहे हैं? क्योंकि दे हैव टू बाई एसेट्स, राइट? तो ये बाई किससे करते हैं? दैट इज द क्वेश्चन, एंड दैट इज व्हाई द सिग्निफिकेंस ऑफ, क्योंकि म्यूचुअल फंड का जो मैनेजर है, दैट मैनेजर विल नॉट टिपिकली गो and knock on the doors of the companies and will say that, okay, I will buy your stocks. The mutual fund managers don't go to the companies and buy the stocks, right? So they accumulate the funds. So unke paas funds aa gaya,
हमने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया, उनके पास फंड आ गया. नाउ द क्वेश्चन इज फ्रॉम वेयर दे विल बाई. दे हैव टू बाई एसेट्स, राइट? एसेट्स मतलब एसेट्स जैसे हो गया आपका स्टॉक्स हो गया, स्टॉक्स इज एन एसेट. देन देयर इज करेंसी हो गया, फॉरेक्स हो गया. दीज आर ऑल एसेट्स एंड दीज एसेट्स आर देयर इन द फाइनेंशियल मार्केट, राइट? सो दे हैव टू बाई एसेट्स. और ये एसेट्स कहाँ से खरीदेंगे? अब म्यूचुअल फंड का मैनेजर रिलायंस के कंपनी में जाके नहीं बोलेगा मुझे आपके स्टॉक्स खरीदने, ऐसा नहीं होता है. अंडरस्टैंड, दीज आर द ब्यूटी एंड द अमेजिंग लर्निंग ऑफ फाइनेंस. तो फिर म्यूचुअल फंड किसके पास जाएगा? म्यूचुअल फंड का मैनेजर, यस, दे विल रीच आउट टू समवन ऑन द सेल साइड. दे विल रीच आउट टू समवन ऑन द सेल साइड. अब आपको समझ में आ रहा होगा ये सेल साइड का सिग्निफिकेंस क्या है. तो मैं एक बार दोबारा वो डायग्राम दिखाता हूं कि उस सेल साइड में कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं. तब आपको ये समझ में आया होगा कि म्यूचुअल फंड्स, सॉरी, बाई साइड में जो आपके कंपोनेंट्स हैं वो बाई कहां से करते हैं? बाई क्या करना है? एसेट्स को बाई करना है. वो बाई कहां से करेंगे? सेल साइड से करेंगे. देखो सेल साइड्स में क्या क्या आता है. सेल साइड्स में आता है आपका इन्वेस्टमेंट बैंक्स आते हैं, जिनको हम ब्रोक, ऑल्सो देर आर ब्रोकर डीलर्स. अब ये क्या होता है मैं भी आपसे बात करूंगा, ठीक है? एक बात गौर करना, मैंने आपको बोला था इक्विटी एनालिस्ट क्या करता है? कंपनी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन कंपनी से लेता है. ऑब्वियसली मैंने आपको बोला था फाइनेंस इज ए टू वे प्रोसेस. अगर वो कंपनी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन दे रहे हैं तो वो भी एनालिस्ट से चाहेंगे कि इंडस्ट्री एंड कॉम्पिटिटर इंफॉर्मेशन उनको मिले. अब ये एनालिस्ट, अगर आप गौर करो, बाई साइड को आइडियाज देता है. आइडियाज क्या देता है? जैसे जो इंफॉर्मेशन कंपनी से मिला, एनालिस्ट इनको इंफॉर्मेशन देता है, आइडियाज देता है, कौन सा सेक्टर कैसा कर रहा है, कौन सी कंपनी क्या कर रही है, कौन प्रोडक्ट लॉन्च करने वाला है. तभी एंड बाई साइड वाले क्या करते हैं? एनालिस्ट को रैंकिंग देते हैं, पैसा नहीं देते हैं, एनालिस्ट को रैंकिंग देते हैं. मैं आपको एक बात बताऊं, इक्विटी एनालिस्ट, अगर आपने ये सीएनबीसी टीवी में एनालिस्ट आते हैं, बाकी सारे लोग भी आते हैं, आप जब सीएनबीसी बिजनेस वगैरह फॉलो करते हो तो इन एनालिस्ट की रैंकिंग, शायद आपने कभी इस तरह सुना नहीं होगा कि, पर इस एनालिस्ट की, इन एनालिस्ट की रैंकिंग होती है जो कि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स मतलब बाई साइड देते हैं इन एनालिस्ट को रैंकिंग. और मैं आपको एक बात बताता हूँ, रैंक 1 और रैंक 10. सो रैंक 1 का जो कॉम्पेंसेशन होता है, कंपेंसेशन कौन देता है? कंपेंसेशन सेल साइड देता है. कंपेंसेशन सेल साइड देता है इन एनालिस्ट को. सो कंपेंसेशन जो होता है बेस्ड ऑन द रैंकिंग होता है. तो अगर आप किसी इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के इक्विटी एनालिस्ट हो फॉर एग्जाम्पल, या इन्वेस्टमेंट एनालिस्ट हो, और आपकी रैंकिंग है जो आपको, मान लो किसी हेज फंड ने रैंक किया है आपको, और अगर आप रैंक 1 में हो तो आपकी सैलरी 10 गुना से 20 गुना ज्यादा हो सकती है रैंक 10 वाले से. सो आप समझ सकते हो कैपिटल मार्केट में इक्विटी और इन्वेस्टमेंट एनालिस्ट की कितनी डिमांड से ज्यादा ये भी जरूरी है कि उन लोग ऑपरेट कैसे करते हैं, हाउ मच दे आर, कितनी इंपॉर्टेंस है उनके एनालिसिस की, जिस वजह से उनको रैंकिंग वगैरह दी जाती है. इनफैक्ट मैं अभी मीडिया के बारे में भी बात करूंगा इस डायग्राम में. मीडिया उनको रेपुटेशन भी देता है, बोलते हैं कि इस एनालिस्ट से आया हुआ इंफॉर्मेशन कितना सही है, उसके बेसिस पे ये लोग डिसीजंस लेते हैं, कौन सा सेक्टर क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, एंड सो एंड सो फोर्थ. यहां तक बात समझ में आई मेरी? कैन आई गेट ए क्विक यस ऑन द चैट बॉक्स? यहां तक बात समझ में आई मेरी? आर यू एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टॉकिंग? यहां तक बात समझ में आई मेरी? There are some direct messages open, so you can just message me. Okay. Let's talk about the sell side now. Let's talk about this. ये डायग्राम को ध्यान में रखना अपने पास. आपको समझ में आ गया है अभी तक कि बाई साइड क्या होता है? बाई साइड बाई कहां से करेगा? ऑब्वियसली सेल साइड से करेगा. तो लेट्स टॉक अबाउट दिस. ओपन द व्हाइट बोर्ड वंस अगेन. अब देखो, ये जो एनालिस्ट होते हैं, अभी सुनते रहो ध्यान से. एनालिस्ट जो होते हैं, जो हमने एनालिस्ट डायग्राम देखा, तो एनालिस्ट टिपिकली दे वर्क फॉर इन्वेस्टमेंट बैंक्स. ये आईबी के लिए काम करते हैं, इन्वेस्टमेंट बैंक्स के लिए काम करते हैं, राइट? अब इन्वेस्टमेंट बैंक के अंदर ये एनालिस्ट 3 तरह के लोगों के साथ डील करते हैं. सो ऑब्वियसली ये एनालिस्ट जो होते हैं ना, वो किसी तरह के, सो दे कवर सर्टेन सेक्टर, किसी सेक्टर को कवर करते हैं, उस सेक्टर के अंदर कुछ कंपनीज को वो फॉलो करते हैं, एंड सो फोर्थ, राइट? तो
ये एनालिस्ट इन्वेस्टमेंट बैंक्स के लिए काम करते हैं। ओके, इन्वेस्टमेंट बैंक्स के अंदर जब ये काम करते हैं, विद इन दीज बैंक्स इक्विटी एनालिस्ट जो होते हैं, दे स्पीक टू विद इन दीज बैंक्स। इक्विटी एनालिस्ट जो होते हैं वो तीन तरह के लोगों के साथ डील करते हैं इन्हीं बैंक के अंदर। पहला ट्रेडर्स, दूसरा सेल्स पीपल और तीसरा इन्वेस्टमेंट बैंकर्स। सो इन्वेस्टमेंट बैंक में इक्विटी एनालिस्ट काम करते हैं, वो किसी सेक्टर या कंपनी को फॉलो करते हैं, एनालिसिस करते हैं। विद इन इन्वेस्टमेंट बैंक इक्विटी एनालिस्ट तीन तरह के लोगों के साथ डील करते हैं, ट्रेडर्स, सेल्स पीपल एंड आईबी, इन्वेस्टमेंट बैंकर्स। अब ये ट्रेडर्स क्या है? लेट्स टॉक अबाउट ट्रेडर्स। अब ये ट्रेडर्स क्या है, ध्यान से सुन। ट्रेडर्स को काफी बार मार्केट में इनको कहा जाता है मार्केट मेकर्स या ब्रोकर डीलर्स। कोई भी टर्म यूज किया जाता है इनके लिए, आप नोट बना सकते हो। ट्रेडर्स को काफी बार कहा जाता है मार्केट मेकर्स या ब्रोकर डीलर्स, राइट। सो इन ट्रेडर्स की जिम्मेदारी है ये इंश्योर करना कि अलग अलग फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के खरीदार भी हैं और उनको बेचने वाले लोग भी हैं, उन्हीं को ट्रेडर। सो ट्रेडर क्या करता है, वो बायर एंड सेलर को एक जगह पे लाके ट्रेड करवाता है, राइट। सो ट्रेडर्स की वही जिम्मेदारी है कि दे मस्ट इंश्योर दैट देयर आर बायर्स एंड सेलर्स फॉर वेरियस फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। एंड हाउ डू ट्रेडर्स मेक मनी? दे मेक मनी फ्रॉम द बिड आस्क स्प्रेड। अगर आपने ये टर्म सुना नहीं होगा, सो बिड आस्क का एक स्प्रेड होता है। स्प्रेड मीन्स, so for example, what is bid? So bid, so आप ध्यान रखना, इक्विटी एनालिस्ट इन्वेस्टमेंट बैंक, इन्वेस्टमेंट बैंक में काम करते हैं, जो कि सेल साइड का पार्ट है। बाई साइड सेल साइड से आके चीजें खरीदता है। ओके, नाउ विद इन द बैंक इक्विटी एनालिस्ट, विद इन द इन्वेस्टमेंट बैंक इक्विटी एनालिस्ट तीन लोगों से बात करता है, ट्रेडर्स, सेल्स पीपल एंड इन्वेस्टमेंट बैंकर्स। ओके, क्या बात करता है? इन लोगों से बात करता है टू प्रोवाइड आइडियाज फॉर द काइंड ऑफ कंपनीज और सेक्टर दीज एनालिस्ट आर कवरिंग। ठीक है, अब ट्रेडर्स क्या होते हैं, हमने अब ट्रेडर्स के बारे में जानना शुरू किया। सो ट्रेडर्स क्या होते हैं, हमने देखा ट्रेडर्स हमको मार्केट मेकर्स या उनको ब्रोकर डीलर्स भी कहा जाता है। इनकी जिम्मेदारी है कि अलग अलग फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के बायर एंड सेलर, देयर आर बायर्स एंड सेलर्स। ओके, now how do the traders make money? They make money. How do equity analysts make money? Obviously by getting the ranking from the buy side, but overall they get compensation from the investment banks. उनसे compensation मिलता है। प्लस मैंने आपको पिछली बार एक बात भी बताई थी इक्विटी एनालिस्ट के बारे में कि एक कैरिड इंटरेस्ट भी होता है फॉर हेज फंड्स, जिनके थ्रू वो पैसा बनाते हैं। पर इसके ऊपर हम बाद में और बात करेंगे, पिछली बार मैंने डिटेल में बात की थी। बट दोज हु वांट टू नो मोर, एज आई टोल्ड यू, द कमिंग संडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट दिस इन वन ऑफ माय लेक्चर्स। एनीवे, अभी ट्रेडर्स पे ध्यान दो। ट्रेडर्स को मार्केट मेकर्स एंड ब्रोकर डीलर्स भी कहा जाता है। एंड हाउ डू दे मेक मनी? दे लार्जली मेक मनी फ्रॉम द बिड आस्क स्प्रेड। बिड आस्क स्प्रेड, ये क्या होता है? सो लेट्स टॉक अबाउट व्हाट इज अ बिड। सो बिड क्या होता है? बिड इज द हाईएस्ट प्राइस an investor is willing to pay for a share. It is the highest price. It is the highest price that an investor is willing to pay for a share. That is bid. What is ask? Ask is the lowest price that a seller is willing to sell a share for. This is for an investor that is obviously trying to buy a share. So bid is the highest price that an investor is willing to pay for a share, and ask is the lowest price that a seller is willing to sell a share for. ठीक है, ये जो इन्वेस्टर होता है, ध्यान से सुनना। नाउ ऑन द बाई साइड मतलब बाई साइड में कौन कौन है? बाई साइड में आपके इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, राइट। जो भी जितने भी फंड्स हैं, म्यूचुअल फंड्स, एंडोमेंट फंड्स, ये बाई साइड में है। अब buy side don't pay the investors directly for their reports because buy side analysts के reports use करते हैं, right? Rather
वो क्या करते हैं, वो ये जो बाई साइड है, बाई साइड में जो हमारे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, वो ट्रेडर्स के साथ डील करते हैं, ट्रेडर्स के साथ डील करते हैं ट्रेड करने के लिए ऑब्वियसली। एंड वो इस ट्रेडर के साथ वो इक्विटी एनालिस्ट जुड़ा होता है, इफ यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। सो जो बाई साइड है, बाई साइड वाला सेल साइड में आएगा बाई करने के लिए, तो वो ट्रेडर इन्वेस्टमेंट बैंक्स के अंदर ट्रेडर के साथ डील करता है। वो डायरेक्टली रिपोर्ट नहीं खरीदता है इक्विटी एनालिस्ट से, वो ट्रेडर के साथ डील करता है। ऑब्वियसली ट्रेडर के पास इंफॉर्मेशन कहां से आती है, इक्विटी एनालिस्ट से आती है, बिकॉज इक्विटी एनालिस्ट इन्वेस्टमेंट बैंक का पार्ट है, वो ट्रेडर से डिस्कस करते ही है, इंफॉर्मेशन उनसे भी लेते हैं, तो ट्रेडर उनसे इंफॉर्मेशन लेते हैं। सो जब ट्रेडर कमीशन करता है तो उसका कुछ पार्ट इक्विटी एनालिस्ट को भी देता है। सो इस तरीके से बाई साइड इक्विटी एनालिस्ट के रिपोर्ट्स को अप्रिशिएट करता है। ऑब्वियसली बात है, ये जो कमीशन होता है इक्विटी एनालिस्ट को, जो कमीशन मिलता है, ये उतना नहीं मिलता है, उतना पैसा वो नहीं कमा पाते हैं इस प्रोसेस के थ्रू, बट थोड़ा बहुत पैसा कमाते हैं। तो आपको ये बात समझ में आई? डू यू अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग? बाई साइड वाले सेल साइड से चीजें खरीदते हैं, डायरेक्टली इक्विटी एनालिस्ट का रिपोर्ट नहीं लेते हैं, वो ट्रेडर मतलब मार्केट मेकर्स और ब्रोकर डीलर्स के पास ट्रेड करते हैं। ट्रेड करते वक्त जिस रिपोर्ट का वो यूज करते हैं, वो ट्रेडर के साथ कोई एक इक्विटी एनालिस्ट लिंक्ड होता है, उसका रिपोर्ट वो यूज करते हैं या उसका रिपोर्ट उस समय वो पढ़ते हैं। और इस ट्रेड में ये बिड आस्क स्प्रेड में जो पैसा बनता है, उसका कुछ कमीशन इक्विटी एनालिस्ट को मिलता है। ऑब्वियसली बात है, ये इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स 100 रुपए, 200 रुपए, 1 लाख, 2 लाख रुपए इन्वेस्ट नहीं करते हैं। ऑब्वियसली बात है, दे आर बिग करोड्स ऑफ मनीज, मिलियंस ऑफ डॉलर्स, उसमें थोड़ा परसेंटेज भी होता है तो वो सिग्निफिकेंट वैल्यू दिखता है। बट फाइनेंशियल दुनिया में ये जो कमीशन है, ये उतना नहीं है एज फार एज इक्विटी एनालिस्ट कमीशन इज कंसर्न। ये बात समझ में आई सबको? Is this point clear? Do you find it very interesting, right? How do typically it works? Do you find it interesting? Can I get some quick replies, please, on the chat box? Are you finding it interesting? Guys, am I audible? Can I get some replies, please, quickly? सूरज, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। सो आपको अगर मैंने पिछले क्लासेस की भी कुछ चीजें रिपीट कर दी है। बाई साइड में ना इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं। बाई साइड में ये कौन होते हैं? ये होते हैं आपके म्यूचुअल फंड्स, एंडोमेंट फंड्स, मैंने बताया इसके बारे में, हेज फंड्स। अब ये क्या बाई करते हैं? ये फाइनेंशियल एसेट्स बाई करते हैं। ये कहाँ से बाई करेंगे? ये सेल साइड से बाई करेंगे। एक फिगर दिखाया था मैंने, सेल साइड से बाई करेंगे। सेल साइड में इन्वेस्टमेंट बैंक्स होते हैं। तो ये जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, वो डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट बैंक्स में किसके साथ डील करते हैं? वो डायरेक्टली इक्विटी एनालिस्ट का रिपोर्ट यूज नहीं करते हैं, वो वाया ट्रेडर्स जाते हैं। तो ट्रेडर्स आर नथिंग बट मार्केट मेकर्स और ब्रोकर डीलर्स, जहां पे द ट्रेडर्स मेक मनी थ्रू ट्रेड ऑब्वियसली, बट इट्स अ बिड आस्क स्प्रेड। बिड क्या होता है? इट इज द हाईएस्ट प्राइस दैट एन इन्वेस्टर इज विलिंग टू पे फॉर अ शेयर, एंड व्हाट इज ask is the lowest price that a seller is willing to pay for a willing to sell a share for, right? That is the lowest price. So जो bid ask का spread होता है, the trader makes money out of it. Now what I was telling is this: buy side directly equity analyst का report doesn't use the reports directly. Buy side through traders or market makers or broker dealers, they get associated. So there is an equity analyst associated with the trader, and the buy side uses the report eventually from the equity analyst, and the commission that the trader makes based on the bid ask spread, part of it goes to the equity analyst. That's what I'm talking about. I hope that point is clear. And now comes to the second statement. So if any one of you have been in a trading floor, I don't know how many of you have been on a trading floor, you all know that traders deal in the short term. You all, I am sure you all are aware of this, and maybe by looking into some movies also, traders deal in the short term. Traders deal in short term, right?
where obviously the decisions of the institutional investors is what matters. Because see, these institutions, आपको ये समझना पड़ेगा, traders deal in the short term, and that is why what these big companies, big funds are doing. Companies mean big funds, big mutual funds, hedge funds. What they are doing on a trading floor matters a lot to the traders. So traders find it quite valuable to know the trading activity of these investors, because obviously, whenever any transaction happens, involves information. So do you understand that suppose a hedge fund like Goldman Sachs comes and Goldman Sachs is doing a particular trading, bid and ask for a particular thing on a trading floor? See, that will be quite a interesting point for many traders, because then when I say Goldman Sachs would be part of many mutual funds or hedge funds, for example. So becomes very important that traders find it quite valuable to know the trading activity, right, of these investors. As I said, because transaction involves information. For example, what are these funds buying? What are these funds liquidating? Acha, guys, keep reminding yourself. I always tell you one thing in my classes, that I will always use some words which is very important for you to keep in mind, as you to express yourself in the interviews also, to show the interviewer that you have that mindset of an analyst. So these terms are very important. Liquidating, right? So anyway, coming to the context, the traders are very interested to know that are these large funds buying, are these funds liquidating something, and this is a very valuable information for the traders. And that is why I'm coming to a very interesting statement. Good equity analysts will make sure that उनके जो traders हैं उनको ये information मिले सही time पे. I repeat once again. I told you, right? There are equity analysts which will be linked to the traders. There are equity analysts who are linked to the traders in an investment banking firm. So good equity analyst will be definitely ensure that traders get the share of the information, which is what funds are the large funds are buying what, they are liquidating what. Because if they get the right kind of information at the right time, obviously institutional investors are going to use that kind of information through the traders. Do you get this link? Do you get the importance of the equity analyst in an investment bank? When I've spoken about that how they interact with traders, and what is the importance of that interaction with the traders in the investment banks. Is that point clear? Can I get a yes, no, or maybe in the chat box? So we are done with the first one. Now we will talk about the second. Guys, can I get some replies quickly? Is this point clear to all of you? Then we come to our next point, that is interaction of the equity analyst with the salespeople. Okay, thank you all. Thank you. So see, understand, guys, I repeat once again, very important. If you ask me, sir, why this information is important as an analyst, what you are teaching us. See, when you sit in front of an interviewer, and the interviewer asking about, say, for example, you're sitting in an interview in a KPO such as WNS or Genpact, or maybe a big four like EY, Deloitte. So when you sit for a financial analyst, typically some of the questions are, what is your favorite subject as a financial analyst? Now, generally the answers are financial statement analysis, or financial reporting, or business valuation, or for example, you will say financial management. Typically, that's the answer, right? Now, the next obvious question from there is, so what do you know? How does an analyst work in a capital market? Right? What is the importance of an analyst in a capital market or in a financial market, for example? And that is where you start talking about these things, right? That the analysts are the heart of capital market.
Analysts are employed by investment banks, where they are dealing with three kind of people: traders, salespeople, and investment bankers. How do they deal? Then you talk about that analysts provide ideas to the buy side. Obviously, then he will ask, what do you mean by buy side? Can you give examples of buy side? And what are they buying for? So guys, you need to understand the numbers. So lot of my students and lot of the people, when I talk to, they say, sir, I know how to do a financial modeling, but I don't know where to use the modeling. I sometimes see the reports and I don't know how do these reports typically work, right? And that is where this is important to understand how the information flows in a capital market, which is such a complex thing. By the way, why capital markets are so complex, I have not given that answer. I have just told you the diagram looks very complex in comparison to our simple diagram, which I have shown you. But obviously, one can always ask this question, sir, why it is so complex? Why it can't be as simple as what you have shown? And there is an answer for that, and that's a part 2 of our discussion tomorrow, which is which is very very important discussion, which has a big impact in the entire I would say the discussion that we're going to do tomorrow, with why capital markets are so complex, will have an impact in your mind regarding the role of finance in our society. And it's a very, very important thing, because that's how you have to learn things. And that is how things are taught in a tier 1 college, for example, in IIMs, what we are doing over here. When you build such kind of mindset, then that mindset is shown in the interview. Because I repeat once again, these are all the stories which are there behind the numbers. These are stories to be learned. The numbers and everything will happen, and it happens through Excel, and at one level you will be able to show those numbers. But if you are able to correlate with these kind of stories, that is where your mindset is ready for being an analyst. All right, let's talk about the second one, which is your interaction. So what are we talking? So we learned about the interaction of equity analyst in an investment bank with the traders. We learned about that. Okay. Now we are learning the interaction of equity analyst with salespeople. We are learning the interaction of equity analyst with salespeople in the investment banks, right? So obviously, salespeople, it's unsurprisingly, salespeople will sell the financial instruments. Obviously, they are in the sell side. They will sell financial instruments to your buy side people. There is no doubt about it, right? Now, analysts might talk directly. Analysts might talk directly. So what happens is, so see, the buy side will come to traders, and there is an equity analyst which is linked to the trader, right? In the sales time, so either analyst can talk to a salesperson and the salesperson is selling that to the buy side, or obviously if you are high ranking, then the buy side will directly talk to you. Based on your information, it will talk to the salesperson in that investment banking firm. So salespeople also need to understand that what kind of analyst they are dealing with. If it is a high ranking analyst, equity analyst, then salespeople also know that the buy side may have contacted this person. और इसीलिए sales वालों को भी so you got to understand that uh, the sales side, that is the sales people, they woo means वो अट्रैक्ट करते हैं बाई साइड को डायरेक्टली, ताकि उनका कमीशन ज्यादा रहे। क्योंकि इक्विटी एनालिस्ट के इंफॉर्मेशन को सेल साइड लेता है, उसको अलग करते हुए वो इंफॉर्मेशन देता है बाई साइड को, जिससे बाई साइड उनसे ज्यादा खरीदे, राइट? यू गॉट टू अंडरस्टैंड दिस। तो ये डायनामिक्स है, राइट? या तो बाई साइड डायरेक्टली इक्विटी एनालिस्ट से बात करके फिर सेल्स वालों से खरीदेगा, बट सेल्स वाला क्या बोलेगा, मैं इंफॉर्मेशन देता हूँ, वो इंफॉर्मेशन जिससे बाई साइड मुझसे ज्यादा खरीद, सो बाय मोर फ्रॉम मी सो दैट माय कमीशन इंक्रीजेस, right? So that's the kind of interaction you have of equity analysts with the sales people in the investment banks. Is this point clear? Is this point clear? Before I come to the third point. Is this point clear? The interaction of equity analyst with the sales people. It's very straightforward, but is this point clear? All right.
All right. Let's go with the third interaction I told you, which is investment bankers. Now, let's take another screen. So let's talk about our investment bankers. So like commercial banking means retail banking. So you know, right? How do commercial bank operate? Commercial bank operate with respect to loans and savings account. That's it, right? Other instruments are all part of it. So loans और savings का जो spread होता है, उसी के basis पे commercial banks operate करते हैं. All the banks that we talk about, HDFC, SBI, and everything, all the banks work on the spread of loans as well as savings account, right? Deposits बोलते हैं, right? The deposits can be in the form of savings account, current account, other deposits also, FD and everything. So एक तो हो गया deposit और एक हो गया loan. इसके basis पे ही आपके commercial banks operate करते हैं, right? इन्वेस्टमेंट बैंकर्स कैसे ऑपरेट करते हैं? इन्वेस्टमेंट बैंकर्स वर्क विद कंपनीज. सो इन्वेस्टमेंट बैंकर्स जो होते हैं, so investment bankers work with companies so they those kind of companies, those who want to raise capital. So those companies that need fund, those companies who want to raise fund or investment bankers work with those companies, those who want to buy or sell any assets, right? Any kind of financial asset, right? Investment banks typically provide the financing. So financing, obviously, if you want to buy, if you want to buy or sell any asset, or you want to raise capital for your business, then you need financing. That financing can happen through IPO. It can happen through a venture capital fund, private equity fund. These are all the help that the investment banks typically provide. Investment bankers typically provide, right? It can be mergers and acquisitions also, right? So if you understand carefully, so how does it typically looks like in a business ecosystem? एक business ecosystem में कैसे दिखता है ये? So अगर आप गौर करो, ये हो गया, ये मिडिल में आता है. ये हो गया इन्वेस्टमेंट बैंकर. यहाँ पे एक कंपनी है, यहाँ पे फाइनेंशियल एसेट्स है. So this is company, this is financial asset. Now this company wants to buy the financial asset. This company wants to sell the financial asset. This can be another company, C2. This company wants to get merged by this company, right? So all these kind of activities is done through an investment banker. So investment banker typically works like an intermediary between a company and another company, or if the company wants to buy a financial asset, or the company wants to raise capital through IPO and other things, right? Now, remember one thing. So just imagine you are the equity analyst working for an investment bank, and you are responsible for a merger and acquisition, or you are responsible for an IPO. अगर आपने अशनीर ग्रोवर जो भारत पे के एक्स फाउंडर मैं बोलूंगा, या एक्स सीईओ, तो अगर उनकी स्टोरी पढ़ी है तो वो भी यही बात करते हैं ना कि वाज इन इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फर्म. इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में उन्होंने काफी सारे मर्जर्स एक्विजिशंस में काम किया, या उन्होंने आईपीओ रेस करने के लिए काम किया. मैं एग्जांपल वो दे रहा हूँ, हो सकता है आप लोग इससे रिलेट कर पाओ. वो यही काम है जो मैं बता रहा हूँ. और इसका जो कमीशन होता है ना, वो सो फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आईपीओ का कमीशन बोलूं, फॉर एग्जांपल, अगर आईपीओ का कमीशन एज हाई एज 7% तक जाता है. मतलब अगर आप गौर करो, अगर 10 बिलियन का ट्रांजैक्शन है, तो आप गौर करो 7% कमीशन कितना होता है फॉर द फर्म. और उसके बाद एनालिस्ट को भी मिलता है वहां से. या फॉर एग्जांपल, अगर आप और मर्जर्स, ये तो आईपीओ का 7% कमीशन तक जाता है कंपनी को, और 1% जाता है फॉर मर्जर्स एंड एक्विजिशन इन अ स्टैंडर्ड वे, राइट? सो कहने का मतलब मेरा ये है कि इक्विटी एनालिस्ट जो होता है वो आपका इन तीन तरीके से इन्वेस्टमेंट बैंक्स में इन तीन तरीके से इंटरेक्शन करता है. ट्रेडर्स के साथ इंटरेक्शन करता है फॉर हेल्पिंग देम टू सेल टू द बाई साइड. सेल्स पीपल के साथ इंटरेक्ट करता है
again for helping them to sell to the buy side, and investment bankers के साथ for IPO financing, equity financing, IPO, mergers and acquisitions, for helping a company to raise capital or buy or sell any operating asset. अगर किसी कंपनी को कोई ऑपरेटिंग एसेट सेल करना है, बाई करना है या पैसा रेज करना है, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग आपके इंटरमीडियरी है। और ऑब्वियस सी बात है, वहां पे जो एनालिस्ट होता है वो इस पूरे ट्रांजैक्शन का हिस्सा रहता है। इसीलिए इतना अमेजिंग करियर पाथ है ये, और इस तरीके से ये काम होता है। समझ में आया आप लोगों को? गोपाल, सो गोपाल का क्वेश्चन है जो डायरेक्टली मुझे आया है, कैन बाई साइड एंड सेल साइड बोथ इन वन फर्म? सो I am talking about a capital market, right? Now, when you talk about one firm, for example, so one company can have an investment banking arm. So, for example, that's a family office. That's an investment banking firm. And another part can be the company has a mutual fund. For example, the company has invested a lot in order to make. So you got to understand that one firm, buy side, sell side, it has got some layers. I hope you understand my answer. So one firm cannot be buy side, sell side. One firm can determine how to build a buy side and a sell side, because then that firm will be a conglomerate, right? That is the first answer to your question. How investment bank charge for an IPO? So investment bank are the intermediaries, right? Now, if you are, what is an IPO? IPO is basically initial public offering, which is helping you to raise funds from the money, from the public. So once you raise money from the public, that percentage is taken by the investment firm, which is typically till at the rate of 7%, maximum 7%. For mergers and acquisition, it's around 1%. Does that answer your query, Gopal? I hope you understand how does a capital market works in terms of the buy side and the sell side. Yeah, cool. Great. All right. So, guys, I wanted to have a 1 hour of discussion to complete the sell side. And this is where I have completed the sell side part of it. And I want to talk about, so I just want to tell you one important thing, that I'm going to talk about the incentive, how do equity analysts makes money. And there is a fundamental problem of the complex, why the capital markets are so complex. There is a fundamental problem of there is a problem that is this very famous concept, which is called as principal agent problem. Principal agent problem. Now, these two are the part 2 of my masterclass tomorrow. Principal agent problem, which defines why capital markets are so complex. Very interesting, and we will do some questions out of it. And how do equity analysts make money? Because, by the way, whatever I have told you right now, it's through only commissions. But how do equity analysts make money? Is it through only commissions, or there are some other forms of it? I want to talk about that also. Because that is how you start analyzing how does an equity analyst make money and build the career. Now, I have one quick point over here. We are another 15-20 minutes over here now. And then so first of all, can I get a quick thumbs up? Did you learn in the last, I would say 50 minutes? Did you learn many things? Was it interesting for you to learn in this manner of building the stories? Can I get a quick yes on the chat box quickly? Quick. Can I get some quick replies fast? I will ask Indranil sir right now. So, guys, you need to wait for 15-20 minutes. There are some important points that Indranil sir is going to talk about. But before that, I will ask Indranil sir to put a link in the chat box. That link is basically a registration form for tomorrow's session. How many of you want to join the tomorrow's session and learn the part 2 of our masterclass? How many of you you want to say, can you leave this session? Suraj, can you wait for just 5 minutes? I think you will get what I'm telling. Just
So guys, to be part of the industry masterclass part 2, and there are some amazing bonuses coming if you become part of the masterclass part 2 tomorrow 7:45. Just fill this form. I'll show you what this form is all about. Are you able to see the form in front of me? Are you able to see the form in front of me? Let me just share the screen and just fill the form quickly. I'll show you the form. Just fill the form quickly. Once it is done, just put a done on the chat box. Indranil, you can share the form on the screen for the people to fill quickly. You can share the form on the screen. Sure. Guys, fill the form. It's just basic information. Fill the form. One very interesting question over there. The form is all about tomorrow's session, Masterclass Part 2. Very, very important. Masterclass Part 2. These are some of the basic questions. Tomorrow is at 7:45. We want to know your motivations for Part 2 of tomorrow's sessions. If it is yes, put that there in the chat box. Once you fill the form, just put a yes on the chat box. Indranil sir will take 5 to 10 minutes more to talk once you fill the form to talk a bit more about the company. And I think that is where we're going to finish. They're all basic questions. If you have any questions, you can ask me if any doubts are there. Done? Great, Aditya. Great. Indranil, you can start your discussion about the company right now. Guys, I hope to see you tomorrow. We are going to do two things. One, we are going to learn about the incentive of equity analyst and the principal agent formula, the agent problem. Very, very interesting concept. And the second thing is, yes, we will send that in the WhatsApp group also, Vikas. And the second point we're going to also do is we're going to talk about few bonuses that we are giving for those people who are becoming part of part 1 and part 2. And if you want to learn more from us, because this is just the tip of the iceberg. There are some bonuses. Please don't miss out. These are from lifetime opportunity. Absolutely. See you tomorrow at 7:45, Vikas. Indranil, over to you. Yes, sir. Great. Wow. What a session. Excited to know more? So definitely fill the feedback form. मुझे और कुछ response चाहिए. Fill the feedback form quickly and put a yes or done. Put into the chat box. सबसे response चाहिए. अगर आपकी feedback form fill हो चुका है, just एक बार chat box पे done लिख दीजिए. Thank you, Aditya. Thank you so much. And tomorrow, जैसे सर ने कहा, tomorrow next part इसके part 2, that is incentive, and one more topic, interesting topic, that is principal agent problem. ये कल होगा 7:45 PM. 7:45 PM. Zoom link थोड़ी ही देर में आपको Zoom link अभी chat box पे मिल जाएगा. मैं बताऊंगा तभी आपको Zoom link chat box पे मिल जाएगा. Zoom link in the sense कल के सेशन के जो Zoom link है, कल 7:45 PM part 2 जो होगा इसका, वो उसकी Zoom link अभी आपको chat box पे मिल जाएगा. उससे पहले अगर सभी का हो चुका है फॉर्म फिल करना, पुट ए यस और डन इनटू द चैट बॉक्स. वन मोर टाइम, और एक बार मैं चाहता हूं अगर किसी का रह गया है, पुट ए यस और डन इनटू द चैट बॉक्स. मैंने फिर से एक बार आपकी एप्लीकेशन फॉर्म चैट बॉक्स में पुट कर दिया है. अगेन वन मोर टाइम, मैं इस फॉर्म के लिंक चैट बॉक्स में पुट कर रहा हूं. अगर किसी ने अभी भी नहीं फिल किया है, क्विकली पुट into the chat box, done, feedback form filled, all anything you can write. किसी ने क्वेश्चन किया है, video replay this session, you will get the recording through YouTube. Go to our YouTube channel, that is SkillEdge official. वहां पे not only this session, इससे पहले के each and every session, हर एक आरंभ सेशन का टोटल लर्निंग मॉड्यूल आपको मिल जाएगा. और इसके पहले जो पहले से हमें फॉलो कर रहा है उन्हें पता है. जो नए हैं उनके लिए मैं बता रहा हूं, मैंने जो टॉपिक स्टार्टिंग में ही आपको बोल दिया, वो टॉपिक डिटेल में है. 2.5 आवर 3 आवर के सेशन है, आपको मिल जाएंगे. ग्रेट. थैंक यू सो मच.
जो लोग नए हैं उनके लिए मैं आई विल टेक अनदर 5 मिनट मैक्सिमम, बिकॉज डायरेक्टली स्टार्टिंग में आपने देखे होंगे कि विदाउट वेस्टिंग मच मोर टाइम हमने डायरेक्टली टॉपिक शुरू कर दिया था. नाउ a quick introduction about SkillEdge for those who are new today. So just give me 1 second. SkillEdge is an award-winning, vernacular-led skill tech platform preparing graduates, postgraduates, working professional students for the financial analyst day one industry ready. Financial analyst is an umbrella. उसके नीचे बहुत सारे profiles होते हैं. Few interesting, few popular profile like equity analyst, credit analyst, investment analyst, research analyst, risk analyst, fraud analyst. And we will prepare you for the all of this profile. पिछले 2.5 साल से we reached across 5.5 lakh students. And उन स्टूडेंट्स को हमने फाइनेंशियल एनालिस्ट, कोर फाइनेंस में एनालिस्ट कैसे बनते हैं उसकी तैयारी हमने करवाई है. एंड द इंटरेस्टिंग पॉइंट इज वी विल टीच यू इन वर्नाकुलर लेड लैंग्वेज. इट मींस वी विल टीच यू इन इंग्लिश एज वेल एज इन हिंदी. जैसे आज आपने देखा फाइनेंस को इतनी आसान भाषा में नहीं सिखाया जाता, बहुत सारे जार्गन्स यूज किए जाते हैं, हार्ड वर्ड्स यूज किए जाते हैं. दैट्स व्हाई इट्स सुनने में बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगता है. बट उसी चीज को हमने बहुत आसान भाषा में बनाया है. 10,000 plus hours of delivery, 200 plus mentor, and this is our strength, guys. ये जो 200 plus mentor है, they are all industry professionals. 3,000 plus students till now, and 20 plus in-house faculty member. They are also from industry. They are all industry expert, and the main thing, they are all Ivy League alumni, Ivy League faculty. It means they are all from IIT and IIM. Few are from Harvard Business School also, and few are from INSEAD France also. 100 plus batches till now. Many more awards and recognitions SkillEdge has received. In the year 2020, we got Best Startup Award by IIT Kharagpur in their Global Entrepreneurship Summit. And also we have collaborated with IIT Kharagpur also. We have a collaboration with FTPO, CII, Startup India, TAI Pune, Business Outreach, and many more. We as a company has been founded by teachers and industry veterans. We are a funded company with more than 20 investors and 8 plus members in our advisory board. Mr. Rohit Ghosh sir, जिनको अभी तक आप सुन रहे थे आज, he is our CEO and the founder of SkillEdge. He is INSEAD France alumni, world #1 B school, more than 20 plus years of experience in this field. He trained more than 10 lakh students in India. And he is one of our mentors. Mr. Shailendra Marathe sir, IIM Bangalore gold medalist, director of this training program, former CFO of Axis. He worked with the companies like Dell, Deloitte, Bajaj Finserv, more than 25 plus years of experience in India as well as outside India. Mr. Ankit Bajaj sir, a professional chartered accountant, over a decade of experience, and he is the product head. Along with Mr. Makrand Athole sir, former CFO of Bajaj Finserv, more than 15 plus years of experience in this field. Mr. Omkar Suman sir, Mr. Devi Prasad sir, former CHRO of Infosys, former DCHR head of Atos. Mr. Suresh Mahalingam sir, board member of Principal and former board member of ITC. Apart from this, Rajveer Singh sir and many other industry professionals are involved in this training program. Names and their designations are present in this slide. If you require, you can take a screenshot
आप इनके लिंक्डइन प्रोफाइल में जाके भी चेक कर सकते हैं। नाउ let us keep in touch. Join tomorrow sharp at 7:45 p.m. Kindly copy the Zoom link थोड़ी देर में within a second. कल के सेशन के Zoom link chat box में अभी आ जाएगा. Copy that Zoom link. Tomorrow join sharp at 7:45 p.m. because you know that passion is never enough, neither is skills. Pratiksha ma'am, yeah. सो जूम लिंक चैट बॉक्स में शेयर हो चुका है. जाने से पहले, एंड करने से पहले क्विक रिकैप, मैं क्विक रिकैप करना चाहता हूं कि क्या क्या इंटरेस्टिंग पॉइंट आज आपने सीखा. फर्स्ट, इन सिंपल लैंग्वेज, कंपनी नीड्स मनी एंड कंपनी रिटर्न द मनी. ये कुछ वर्ड्स है, कुछ सेंटेंस है, याद रखना. कंपनी नीड्स मनी एंड कंपनी रिटर्न द मनी. सेल साइड मोस्टली इन्वेस्टमेंट बैंक में ये टर्म यूज होता है. बाई साइड, इट्स अ इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट. व्हाट इज एग्जैक्टली? accumulate the fund. In investment bank, equity analyst, in investment banking, equity analyst work with traders, salespeople, and investment banker. Again, I'm repeating. In investment banking, equity analyst work with traders, salespeople, and investment banker. What is bid? BID. What is bid? Highest price. What is ask? Lowest price. One interesting term Rohit sir ने use किया था, that is liquidating. Liquidating. Last, analysts are the heart of capital market. आपने capital market का जो block diagram आपने देखा, analysts are the heart of capital market. And the tomorrow's topic, again I'm repeating, tomorrow's very interesting topic, tomorrow at 7:45 p.m. that is incentive. ये equity analyst इनकम कैसे करते हैं, कितने करते हैं? And one important term, one that is principal agent problem. One interesting topic it is, principal agent problem. So let us keep in touch. Join tomorrow sharp at 7:45 p.m. अगर इसी तरह के एक्सपीरियंस आपको लेना है, so definitely हमारे पुराने जितने भी आरंभ हुआ है, go watch and make your notes. आपके नोट्स बनाओ, YouTube में जाओ, देखो, and follow us. ये आरंभ अभी चलता रहेगा. वो जैसे रोहित सर ने स्टार्टिंग में बताया कि हमें एक टारगेट है, इतनी लैक्स ऑफ एनालिस्ट हमें तैयार करना है. Join tomorrow sharp at 7:45 p.m. Link is given in chat box. Copy the link. Also, don't worry, if all of you are a part of our All India community, we have our own All India Finance community जहां पे 600 के ऊपर स्टूडेंट्स हैं, 600 के ऊपर स्टूडेंट्स हैं जो सीख रहे हैं, जो लर्न कर रहे हैं. If you are a part of this All India community group, then you will get all the notification. आपको हर एक नोटिफिकेशन मिल जाएगा. If not, अगर अभी भी उस ग्रुप के हिस्सा नहीं हो, so definitely connect with your skill advisor. अपने स्किल एडवाइजर से कनेक्ट करो, उस ग्रुप का लिंक ले लो एंड ज्वाइन दैट. इस तरह के सेशंस की हर एक नोटिफिकेशन, इंटरेस्टिंग अनाउंसमेंट, बोनसेस आपको कंटिन्यूअसली मिलता रहेगा. सो डोंट मिस टुमारो सेशन. कल टॉपिक के साथ साथ कुछ वेरी इंटरेस्टिंग अनाउंसमेंट है, कुछ बोनसेस है. मैं थोड़ा सा डिस्क्लोज कर रहा हूँ. दोज हु आर पार्ट ऑफ आवर ऑल इंडिया फाइनेंस कम्युनिटी, उनके लिए इंटरेस्टिंग बोनस है, कल उसे बताया जाएगा. Tomorrow sharp at 7:45 p.m. Thank you so much. Thank you for your kind listening. Thank you for your patience, because passion is never enough, neither is skills. Thank you. आप इस लिंक को कॉपी कर लो. हमारे ऑल इंडिया कम्युनिटी में ये लिंक आज रात को ही आ जाएगा.